Very good morning, dear students. As you all know that we have already studied up to chapter 9, and today I am going to explain you lesson 10, children who are wanted every hour. That means those children they want each and every time to work only. They want to learn everything. They want to do every work, whatever the adults do. They want that work. The 24 hours are very decreased to them, for them. They think that the day is not enough to work for them. That's why they think that they have to work each and every time and every hour. So today in this poem I am going to explain you about the children, that what do they want. Here are some questions that I would like to discuss with you. Are you physically strong? This answer you have to give, that you have to think about yourself and in your mind that you are really strong or not, not from physically but mentally also. Are you mentally fit? That means that you have the power of sensibility or understanding or thinking. If these powers you have, then you are absolutely fit. डू यू थिंक दैट यू आर ऑलवेज रेडी टू वर्क? क्या आपको लगता है कि आप हमेशा काम के लिए रेडी रहते हो? समटाइम योर मदर कॉल टू यू फॉर सम वर्क, देन यू डिनाइड समटाइम्स. सो एट द टाइम you have to think that you are ready to work or not. That I will explain you in this poem. Children of spirit, children of will. Children, here we are talking about those children, those have a great energy and they have the willpower, strong willpower. They have the wisdom. Children of muscles, brain and power. Here we are talking about that those children, those are fit from the body and they are mentally fit and they have the power of imaginations and learning and everything. Fit to cope with anything. Those children always ready to do the new thing, to do the creative work and always cooperative with others. These are wanted every hour. That's why they want to work each and every hour. They want to learn something new. Not the weak and whining drones who are troubles magnify. Here we are talking about those children, those are very weak, those are unfit from the mind, and those are not mentally fit, and those are not strong from their body. We are talking about that children. Those are weak and they are whining drones. They always make their troubles very huge. That means कि वो अपनी जो परेशानियां हैं उनको हमेशा बड़ा बताते हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते. They always make troubles for themselves also, but for others also. They always think that the things which they are doing, they are unable to do, they can't do that things. मीन्स कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये काम को कभी नहीं कर पाएंगे, और जो ऐसा करते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते. वो अपनी परेशानियों को बड़ा चढ़ा के बताते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें अपने परेशानियों को ये बताना पड़ेगा कि हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि परेशानियों को बड़ा करने से अच्छा है कि आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें. नॉट द वॉच वर्ड ऑफ आई कांट, but that noble one I will try. We should not keep in mind that I can't do that work. हमें कभी भी अपने माइंड में ये वर्ड नहीं रखना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता. Because nothing is impossible on this world. Everything is possible. The word impossible says to itself that I am possible. In the word impossible, I am is written in the starting. सो जो इम्पॉसिबल वर्ड है उसमें ऑलरेडी आई एम इंक्लूड है. दैट्स मीन्स कि इम्पॉसिबल जो है वो खुद ये बोल रहा है कि मैं खुद पॉसिबल हूँ. सो वाई डू वी थिंक दैट दिस थिंग इज इम्पॉसिबल? बट दैट नोबल वन आई विल ट्राई. दोज चिल्ड्रन, those are very alert and they are mentally fit and energetic. They always think that they have the power to do that, and they always try to do something new, and they do not fear from the problem. They always try to solve the problem. At once you can't solve your problem, but you have to
try and try again. I'm sure and I'm definitely sure that you will get success and you can solve the problem. Do whatever you have to do. Means if you want to do anything in your life, then you have to do that. Nobody is here to stop you, but just remember it, that you should not do the wrong thing, you shouldn't hurt to someone, and you should not do that work which would be hurt to your parents. आपको जो करना है वो करो, पर कभी भी ऐसा काम मत करो जो गलत हो या जिससे आपके पेरेंट्स को हर्ट हो. With a true and earnest zeal, means with a great serious and with great energy we have to work. Bend your sinews to the task, do it with an honest will. आप जिस काम को करने में लगे हो उसको पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करो. डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस एंड you will solve that problem. And if you will do that work with honesty, then you will get the sweet fruit of that work. मीन्स आप जो भी काम करते हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलता है. और अगर कोई परेशानी है तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व ज़रूर कर पाओगे अगर आपके पास एक अच्छा विल पावर है. if you have mindset and you have the great energy for doing that. अगर उस काम को करने के लिए आपके पास great energy है, अच्छा विल पावर, then you can definitely achieve your goal. In the workshop, on the farm, at the desk, wherever you be. आप किसी भी फील्ड में क्यों नहीं हो, whether you are a farmer or engineer or doctor, in each and every field you can do your best. As you have seen the pilot, can we think that we can fly an airplane? We are fear from that, but those are pilot, they take the huge airplane in the sky and without any hesitation they take the many of the peoples to the sky. We should do each and every work with great energy and with honesty so that we can get success or we can achieve our goal. In the workshop, on the farm, at the desk, wherever you be. आप चाहे कहीं भी हो, everywhere, whether you are pilot, you are teacher, everywhere you have to do the work. But if you are doing that work with great energy and honesty, then definitely you can get success in that work. If you want to achieve your goal, then you have to be diligence. means आपके अंदर अगर वो लगन है, पैशन है, उस काम को करने का पैशन है, then you will get your goal and you will get success in your goal. From your future effort, children, comes a nation's destiny. As we all know that you students all are the future of the nation. आप सभी जो हैं वो इस देश का भविष्य हैं. So you have to be powerful, you have to be fit from your mind, and you should have a great energy to do each and every work. And whether you want to do anything, then you have to do that with a great energy and do the best work in your life, so that your parents and your colleagues and everyone, your mates, your friends, everyone would be proud on you. मीन्स आपके जितने भी करीबी लोग हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हों, या जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो हों, आप ऐसे काम कीजिए ताकि उनको आप पर प्राउड फील हो और वो आपसे बहुत प्यार कर सकें. आई हैव एक्सप्लेन यू दोज चिल्ड्रंस, दोज आर मेंटली फिट एंड फिजिकली फिट. They have the strong willpower and they always ready to work so that they can achieve their goal. जैसे आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे टाइम बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे टाइम पढ़ाई करते रहते हैं और डेफिनेटली दे गेट सक्सेस एंड दे पास इन देयर एग्जामिनेशन. वो जो है एग्ज़ाम में पास भी हो जाते हैं और वो भी अच्छे नंबरों से. The hard work which they are doing daily in their life, the fruits of their hard work they get in their examination.
जब वो इतना मेहनत करके इतना परिश्रम करके पढ़ते हैं तो उसका फल उनको कब मिलता है, उनकी एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि वो पूरा प्रयास करते हैं पढ़ाई करने का और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती रहती है या पढ़ाई के दौरान आती रहती है. सो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड आल्सो डू दैट. यू हैव टू सेट योर माइंड दैट you can achieve your goal and you can get success in your life. But those children, those are very weak. They always avoid the things, they always delay their work. Means जो बच्चे अपने काम को समय पर नहीं करते, हमेशा उस काम को दूसरों पर थोपते हैं या टालते रहते हैं, आज का काम कल करते हैं, they will never get success in their life because they are very lazy and they have not the patience to do that work. क्योंकि बहुत आलसी होते हैं, वो अपना काम समय पर नहीं करते हैं और इसलिए वो अपना जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाते. और जब वो अचीव नहीं कर पाते तो उन सभी बातों को वो दूसरों पर थोपते रहते हैं और दूसरे को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं. बट हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है. क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती इसलिए कि ताकि हम अपना अच्छा बेस्ट करें, और हम में कितनी शक्ति है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ये बताने का, ये एक्सपोज करने का बहुत अच्छा टाइम होता है जब आपके पास प्रॉब्लम होती है तब. सो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल आई वुड लाइक टू से यू दैट नेवर फियर फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, मेक फियर टू प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स को डराओ, प्रॉब्लम से डरो मत, और हमेशा अपने अंदर ग्रेट एनर्जी रखो और हर एक काम को ऑनेस्टी के साथ, लगन के साथ करो ताकि आप उसमें सक्सेस पाओ और आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओ. थैंक यू.